Before starting today's lecture, just a quick review of what we did yesterday. Yesterday, we started with the topic of equation of motion in terms of cylindrical components. And we noted that writing the equation of motion in terms of cylindrical components is very much similar to writing the equation in terms of rectangular components or the normal and tangential components. The only additional thing which is involved in case of cylindrical components is you have got some forces that would be acting along the tangential axis, some forces would be acting along the normal axis. Similarly, the weight, if it is a vertical plane, then the weight would be acting along the negative y-axis. So you need to resolve all these forces along the r and theta axis, for which you will be requiring the angles between the tangential axis as well as between the tangential and r axis, as well as the y-axis or x-axis and the r-axis. So how you are going to determine these angles? Yesterday we noted that in order to find out the angle between the tangential and r-axis, we considered this approximate right angle triangle, and from this triangle we noted that the angle psi, which is the angle between the tangential axis and r-axis, can be found using psi equal to tan inverse r over dr by d theta. Now, since we are considering polar or cylindrical coordinates, then generally r would be given to you as a function of theta. So if r is given to you as a function of theta, you can determine this angle phi to be equal to tan inverse r over first derivative of r with respect to theta. Now, once you are determining psi from this formula, and after putting the values of r and dr by d theta for this particular instant, if psi comes out to be a positive quantity, then it means that the tangential axis lies from the r-axis in a counterclockwise direction at that angle. Similarly, if psi comes out to be a negative quantity using this formula, then it means that the tangential axis lies in a clockwise direction at that angle from the r-axis. Now, when you are solving any problem relevant to this equation of motion in terms of cylindrical coordinates, you should not directly jump onto drawing the free body diagram of that particle which you are doing the analysis. Rather, first of all, you should find this angle psi. सबसे पहला step आपका क्या होता है कि you should find out this angle psi using this formula. Based upon the value of psi and its positive or negative value, you should then move on to drawing the free body diagram. So सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने जिस डायरेक्शन में भी या जिस लोकेशन पे भी पार्टिकल होता है उसके हिसाब से आप r और थीटा एक्सिस जो है वो डिफाइन कर लेते हैं. And then based upon this value, if psi comes out to be a positive quantity, then accordingly आपकी जो tangential axis हैं that should lie from the r axis at that angle in a counterclockwise direction. However, if using this formula, this psi comes out to be some negative value. Negative value का क्या मतलब है कि this tangential axis would lie from the r axis at that angle in a clockwise direction. ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने psi find ना किया और आप randomly tangential axis को show कर देते हैं किसी direction में, तो there is a possibility that those forces which are acting along the t axis, once you resolve it along the r and theta axis, they will give you wrong component. So ज़रूरी है कि free body diagram बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये एंगल साई जो है ये डिटरमिन किया हुआ और उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को देखते हुए यू आर गोइंग टू जज अकॉर्डिंगली कि टी एक्सिस जो है वो किस तरफ लाई करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली जब टी एक्सिस आपकी बन जाती हैं उसके हिसाब से फिर आप अपनी एन एक्सिस जो है वो शो करते हैं कि एन एक्सिस जो है वो आपकी किस डायरेक्शन में लाई करेंगी. सो ये तमाम एक्सिस आपकी डिपेंड कर रही होती हैं साई की वैल्यू के ऊपर. सो यू शुड डिटरमिन दिस वैल्यू साई फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद वंस यू हैव डिटरमिन दिस साई, then you are going to complete the free body diagram. You are going to indicate the various forces which are involved in that problem, and then you apply the equations of motion along the r axis. Summation fr equal to mar, summation f theta equal to ma theta. उसके बाद आप ये दोनों equation apply करते हैं. Now another important thing when you are dealing problems relevant to cylindrical coordinates is कि motion आपका किस plane में हो रहा है. If the motion is occurring in the horizontal plane, so then you are not going to include weight in the equations of summation fr and summation f theta. The reason being, if the motion is occurring in the horizontal plane, then the r axis as well as the theta axis, both of them are going to be within that horizontal plane. या आपका जो horizontal plane है
सारी का सारा मोशन जो कि उसी में हो रहा है, तो वेट वुड बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयरफॉर यू शुड नॉट इंक्लूड वेट इन योर समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा इक्वेशन. However, if the motion is occurring in a vertical plane means ये लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ये अगर आपका प्लेन है और मोशन इसी वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो देन इस वर्टिकल प्लेन में ही आपकी आर एक्सिस होंगी, आपकी टी एक्सिस होंगी, आपकी एन और आपकी आर थीटा एन टी सारी एक्सिस इसी वर्टिकल प्लेन में जो है वो लाई करती होंगी. Therefore, for such problems when the motion occurs in the vertical plane, you should include weight components in your both equation summation fr as well as summation एफ थीटा. तो आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है कि क्या ये मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है और इज इट अकरिंग इन द वर्टिकल प्लेन. इफ इट इज अकरिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन वेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर समेशन एफ आर एंड समेशन एफ थीटा इक्वेशंस. हाउएवर, इफ द मोशन इज अकरिंग इन द वर्टिकल प्लेन, then definitely you have to include weight as well in your various equations of motion, summation fr as well as summation f theta. So are these points clear to all of you? ये just revise की हमने कल का lecture. Clear, sir. Okay, so yesterday we did solve one example which was example 13-10. आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे एंड प्रोबेबली अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम वर्क एनर्जी का इंट्रोडक्शन जो है वो भी देख लेंगे. अगर टाइम नहीं बच सका तो हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. मोरोवर, एज वी हैव अनाउंस्ड yesterday as well that your quiz number 2 is going to be conducted next week. next Tuesday की जो हमारी क्लास है उसका सेकेंड आवर जो है that is going to be reserved for conduct of quiz number 2. The topics which we have already discussed yesterday as well are kinematics of a particle in terms of rectangular components as well as motion of a projectile. तो ये आपके दो टॉपिक्स जो है वो शामिल होंगे क्विज नंबर 2 के लिए जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा. Okay, starting with the first example of today's lecture, which is example 13-12. In this case, you have a can, which is basically this can C as shown to you. So this is the can which we are talking about. This can is having a mass of 0.5 kg and it moves along a grooved horizontal slot. So again, the slot is horizontal. So this is a grooved horizontal slot in which this can is moving. Why this can is moving? Because it is being pushed by this arm OA, which is rotating in a counterclockwise direction at a constant angular velocity of 4 radians per second. So this arm is basically pushing this can within the slot. The function for this slot is given to you as r as a function of theta to be equal to r equal to 0.1 theta. So this slot is in the form of a spiral which is defined by the equation r equal to 0.1 theta, where theta is in radians. If this arm OA is rotating at a constant rate of 4 radians per second in the horizontal plane, you need to determine the force which this arm exerts on the can at the instant when theta is equal to pi radians. In other words, you are talking about the instant when this theta is basically equal to 180 degrees or pi radians, whichever way you are going to read it. बहरहाल आपने जिस इंस्टेंट पे एनालिसिस करनी है उस इंस्टेंट के लिए थीटा इज गिवन टू यू एज पाई रेडियंस. Neglect friction and the size of the can. It means that you are going to take this can as a particle. Okay, now before moving on to the analysis of or before moving on to the solution of this problem, let me clear the screen once again and let me insert a new slide just to have a discussion regarding this. I hope this blank slide is visible to all of you. Visible, sir. Yes, sir. Okay, so basically we are talking about a can, which is this can C, and it is being pushed by an arm which is fixed from this point. Say this point is shown to you as O and this is point A. Okay, so अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये आर्म है जो कि इस कैन को पुश कर रहे हैं, एंड दिस आर्म इज व्हाई पुशिंग इट इज दिस कैन बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट सम एंगुलर वेलोसिटी. सो इट इज बेसिकली पुशिंग दिस कैन. नाउ आपने किया क्या है कि आपने इस कैन के इर्द गिर्द एक ग्रूव में ये कैन रख दी है जो कि इस आर्म की पुश होने की वजह से उस ग्रूव में जो है वो मूव कर रहे हैं. अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक बात आप गौर करें कि दिस इज बेसिकली द सेंटर
of rotation of this arm OA, whereas the center of this curve is basically this point. ऐसे ही है, ये center of the curve है और वो center of the arm है, और आपने इन दोनों centers को थोड़ा सा offset किया हुआ है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप अगर इन दोनों centers को offset ना करते तो फिर क्या होता है, यानी अगर आपका सेंटर ऑफ द कर्व और सेंटर ऑफ द आर्म जो है वो सेम होता, तो उस सूरत में जब आप एक्सिस डिफाइन करते तो आपकी एक्सिस कुछ इस तरह की बननी थी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, हम इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आपकी ये आर एक्सिस बन जाती और अकॉर्डिंगली आर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी जो है वो थीटा एक्सिस आ जाती है. डायरेक्शन पॉजिटिव क्या होता, आर से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे आपकी थीटा एक्सिस आ जानी थी. अच्छा, अब इस सूरत में जब ये कर्व का सेंटर और आर्म का सेंटर एक दूसरे के साथ अलाइन होते, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सिस देन इन दिस केस? वो भी थीटा के लॉन्ग है. वो भी थीटा के अलोंग आ जाता. सो दिस वुड बी योर टेंजेंशियल एक्सिस एंड अकॉर्डिंगली दिस वुड बी योर नॉर्मल एक्सिस. तो आपकी टी एक्सिस और थीटा एक्सिस जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जानी थी. हाउएवर इस केस में अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है. आपने किया क्या है कि आपके पास आर्म का सेंटर जो है और कर्व का सेंटर एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है. इट मींस कि आपके पास कर्व का सेंटर कुछ इस ब्लू इंक से, जो लाइट ब्लू इंक है, इससे मैंने शो किया हुआ है. सो दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द कर्व. इट मींस कि आपके पास आर और थीटा एक्सिस तो यही बनेगी, लेकिन अब इस केस में आपके पास टेंजेंशियल एक्सिस क्या हो जाएंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंशियल एक्सिस एंड अकॉर्डिंगली उसके दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सिस बिकॉज द सेंटर ऑफ द कर्व एंड द सेंटर ऑफ द आर्म आर ऑफसेट विद ईच अदर. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अब हम अपनी ओरिजिनल फिगर के ऊपर अगर वापस आ जाएं, सो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन ऑफ द स्लाइड्स, हम कहते हैं कि दिस इज द आर एक्सिस व्हिच इज बीइंग डिफाइंड फ्रॉम सम फिक्स्ड ओरिजिन टू दैट पार्टिकल. ये हमारे पास एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. सो ये हमारे पास आर एक्सिस आ गई, और जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है, इस आर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास थीटा एक्सिस आ जाएंगी, और थीटा एक्सिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द आर एक्सिस. पॉजिटिव डायरेक्शन उसका क्या होगा, आर से थीटा की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज के ऊपर ही थीटा एक्सिस जो है वो लाई करती हैं. सो दीज आर द आर एंड थीटा एक्सिस. नाउ बेस्ड ऑन our discussion of the previous slide, since this can has not yet reached to its center point of the curve, it means कि इस इंस्टेंट पे अगर मैं टेंजेंशियल एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो वो ये वाली आपके पास टेंजेंशियल एक्सिस आएंगी, isn't it? जी सर. तो आपके पास एक तरह से ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है, ये आर एक्सिस से कितने एंगल के ऊपर लाई कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रही है, काउंटर क्लॉकवाइज, या नेगेटिव डायरेक्शन में? Positive direction. Positive. So once you are evaluating that angle psi using that formula psi equal to tan inverse r over dr by d theta, that psi should comes out to be a positive quantity. अगर आपकी उस फॉर्मूला से psi नेगेटिव आ रहा है, इट मींस कि आप उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं गलत अप्लाई कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट एंगल psi, वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है, tan inverse r over dr by d theta. So in this case we have tan inverse, what is r? It is 0.1 theta. What is dr by d? 0.1. जी आवाज आ रही है मेरी? वो थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ है. Yes, आई sir, होप कि आवाज आ रही 0.1 होगी. जी ठीक है. तो हमने किया क्या है कि साई हम डिटरमिन कर रहे थे, चूंकि लाइट गई थी मुझे वो डिस्कार्ड करना पड़ा है. हम कर रहे थे साई इज tan इनवर्स r ओवर dr by d थीटा. सो r हमारे पास 0.1 थीटा था, dr by d थीटा हमारे पास 0.1 हो जाएगा. ऐसे ही है. सो वंस यू Yes, sir. पुट द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी इक्वल टू पाई रेडियंस, this psi comes out to be 72.3 degrees. So since this psi comes out to be a positive quantity, it means कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिस जो है वो आर एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती हैं. So now drawing the free body diagram, this is our r axis as discussed,
This is the theta axis or the transverse axis. Since psi comes out to be a positive quantity, it means कि हमारे पास ये जो axis हैं जो green से मैं show कर रहा हूँ, it is tangential axis जो कि psi angle के ऊपर lie करती हैं from the r axis, and accordingly perpendicular to this tangential axis हमारे पास जो है वो normal axis आ जाएंगी. So n t r theta ये चारों axis हमारे पास जो है वो आ गई हैं. Are these axes clear to all of you, or is there any question regarding any one of these axes? Here, sir. Clear है? Okay, now moving on to the free body diagram part. After showing the axis, we need to show the forces which are basically acting on this scan C. So since the motion is occurring in the horizontal plane, so it means that we are not going to include weight in our analysis. Then what other forces should we include on this free body diagram? Anyone volunteer? So ये जो स्कैन के ऊपर वो करेगा क्या चीज है जो स्टिक सी है? ये जो आर्म है ये स्कैन को जो पुश कर रहे हैं, it would be exerting some force on the scan. Now, as per our discussion yesterday, what should be the direction of this force? Downwards? नहीं यार, wait. This force Sir, would have a perpendicular to the direction arm. which is Perpendicular to the perpendicular arm. to the contacting surface, yeah, perpendicular to the arm. So what is that perpendicular direction here? Theta. Theta and Theta. along. Theta. It means that this arm would be exerting some force, say FOA or F arm, whichever way you want to write it. So this is the force which this arm would be exerting on this scan. This force would be directed along the theta axis. Is this point clear to all of you? Yes, sir. So, Okay, the next thing would be once you are isolating the scan, it means that you are basically removing all connections of the scan with the surrounding. So the scan is also in contact with this grooved horizontal slot. So once you remove the slot, what force you should get? Sir, reaction force along negative n. Yes, so it is going to be a reaction force depending upon your understanding. It can be either towards the positive n or it can be either towards the negative n. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Take it in any one of these directions, solve it. Once the value comes out to be positive, it means that your assumption is correct. Otherwise, you are going to reverse your assumption. Is this point clear to all of you? So यहाँ मैंने इसको n axis के along towards the negative n axis बना लिया. आप चाहें तो इसको towards the positive n axis बना लें, जिस direction में भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन it should be acting towards the n axis. Is this point clear to all of you? Yes. Okay. So should we include any other force in our free body diagram? काफी है. काफी है, because it is being said that you should have to neglect friction. So you should not include force of friction here in the free body diagram. If it isn't a smooth slot, then in which direction this force of friction would act? So negative t. It should then be acting towards the negative t axis. But since we are neglecting friction here, so it means that these are the only two forces which we must include in our free body diagram. Okay, now we need to resolve these forces once we are applying this equation summation Fr equal to MAR and summation F theta equal to MA theta. It means that we are going to resolve both these forces along the R and theta axis. So once we are writing summation FR equal to MAR, what are the forces which are acting along R axis and what are their angles? Can you determine those angles here? अगर हम थोड़ा सा फिगर को गौर से देखें, अगर ये एंगल साई है, इट मींस दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू साई. So it means that this particular angle which this NC is making with respect to the R axis, it should be equal to 90 minus psi, because the overall angle between the T and N axis is 90 degrees. So the angle which this NC is making with respect to the R axis should be 90 minus psi. So if psi is 72.3, 90 minus psi is going to be 17.7 degrees, isn't it?
Yes, तो sir. अब हमारे पास समेशन एफ आर में क्या चीज आनी चाहिए? सर इसका ही कॉस्ट कंपोनेंट एनसी का Cost component of कॉस्ट NC. कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. हमने पॉजिटिव ही लिया है। So it is going to be NC cos of 17.7 should be equal to MAR. ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी. Yes. Okay, what about summation F theta? F theta में कौन कौन सी फोर्सेस आनी चाहिए? Sir, FOA or So one is this force, which is the force of this arm. The other one is a component of NC, sine yes, component. sir. Should that sine component be positive or negative? The negative. So it should be negative because जब हम NC के कंपोनेंट बनाएंगे इसका cos है यानी थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, R वाला कंपोनेंट इसका जो है वो पॉजिटिव आएगा. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये तमाम सिचुएशन आ जाएगी. सो मूविंग क्विकली टुवर्ड्स द ओवरऑल सोल्यूशन, वी हैव अप्लाइड समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर. ये हमने वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है जिसकी अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जो है वो जिक्र किया था. ये हमारे पास साई की वैल्यू आई थी. अकॉर्डिंगली दिस साई की वैल्यू हमें इंडिकेट करती थी कि टी एक्सिस आर एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल पे लाई करती है. सो अप्लाइंग समेशन एफ आर वी आर गोइंग टू गेट एन सी कॉस ऑफ 17.7 शुड बी इक्वल टू एम ए आर. सिमिलरली एफ माइनस एन सी साइन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0.5 ए थीटा या एम ए थीटा. ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई थी, द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग द आर एंड थीटा एक्सिस. देन मूविंग टुवर्ड्स द काइनेमेटिक्स, ये चीजें आपको क्लियर हैं. R is given to you as 0.1 theta, so at theta equal to pi radians, this value of R comes out to be 0.314. Accordingly, once you differentiate this equation, R dot comes out to be 0.1 theta dot. Putting the value of theta dot, which is given to you as 0.4 radians per second, this R dot would become 0.4 meters per second. Now, since it is given to you in this question that this arm is rotating with a constant angular velocity of 4 radians per second, so accordingly, if theta dot is constant, theta double dot would be equal to 0, which will give you R double dot to be equal to 0. Then AR is R double dot minus R theta dot square. A theta is R theta double dot plus 2R dot theta dot. ये आपके पास AR और A theta की values आ गई. Putting the values of AR and A theta in equation number 1 and 2, the two unknowns which are involved here are the normal reaction NC and the force of this arm OA. So once you solve equation 1 and 2, simultaneously you are going to get the solution for these two values. So FOA, which is the force of the arm, comes out to be 0.8 newtons. The second thing, which is the normal reaction force, it comes out to be minus 2.64 newton. Now, what does this negative sign indicates? assumption की वजह से Inwards लग रही है. This negative sign indicates that our assumed direction of NC was not correct. Rather, NC would be acting towards the positive side of the n axis rather than towards the negative side. अगर आपको याद हो स्टैटिक्स में भी हम यही करते थे. हमने यहाँ अपनी assumption को थोड़ा सा चेंज किया था. अदरवाइज जनरली स्टैटिक्स में भी हमारे पास यही होता था कि all the unknown forces are being assumed to be acting towards the positive side of the axis. Once you solve it, if the sign comes out to be positive, it means that your assumption is correct. If the sign comes out to be negative, it means that you are going to reverse your assumption. तो यहाँ हमने खामखा में अपनी उस assumption को change करते हुए NC को negative side पे assume कर लिया था. हालांकि अगर हम इसको positive लेते तो definitely हमारी assumption यहाँ correct आ जाती. Is it clear to all of you? Yes, sir. Any question which you want to ask regarding this specific example? Okay, so if you have no question, shall we move on to the next example? Yes, sir. Okay, so moving on to the next problem of today, which is one of the problems from the exercise. It is problem 13-99. उसके बाद जो last two problems हैं, they are somewhat more complicated और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे. उसमें फिर एक वर्टिकल प्लेन वाला प्रॉब्लम भी आएगा जो कि हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे. So starting with problem 13-99. In this case, you have a fork rod which is rotating with some
angular velocity given to you as 0.5 radians per second. So this fork rod is used to move the smooth 2 pounds particle around the horizontal path. Again, the path is given to you as horizontal. It means that you are not going to again include weight in your analysis of summation fr and summation f theta. So this 2 pound weight particle is being moved in a horizontal slot due to the rotation of this fork rod. This slot is in the shape of a limacon for which r as a function of theta is given to you, r equal to 2 plus cos theta. If at all times this fork rod is rotating with an angular velocity of 0.5 radians per second, you need to determine the force which this rod exerts on the particle at the instant when theta is equal to 90 degrees. The fork and path contact the particle on only one side. Okay, so once you are doing the analysis at theta equal to 90 degrees, at what location this fork rod would be at theta equal to 90 degrees? तो vertical होगा वो. So that fork rod should be in a position which is this vertical position shown to you here at theta equal to 90 degrees when this particle is basically located at this point. So आपके पास थीटा 90 के ऊपर ये fork rod जो है वो vertical होगा और आपके पास ये particle जो है वो यहाँ lie करता होगा. So as far as the axes are concerned, if we draw those axes which are going to be involved here, so this is going to be our r axis, the radial axis which is being defined from some fixed origin to that particle at the instant जो कि आप consider कर रहे हैं. So this is going to be the r axis. What should be theta axis now? So जहाँ पे वो क्या है pin particle है उसके flat horizontal. So this is going to be theta axis which is being defined perpendicular to r axis. The positive direction of this theta axis is going to be towards is going to be 90 degrees in a counterclockwise direction from the r axis. So are these two axes clear to all of you? Yes, sir. Okay, what about t axis? Although हम फॉर्मूला तो अभी लगाएंगे, but यहाँ आपकी टेंजेंशियल एक्सिस जो कि हमें नजर आ रही है, the tangential axis at this instant should be this particular axis. ऐसे ही है जो ग्रीन से मैंने Yes, शो sir. की है. So आपके पास एक तरह से टेंजेंशियल एक्सिस जो है वो आर्क के किस साइड पे लाई कर रही है? Negative side. Clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई कर रही है. So what should that psi comes out from that Negative value formula? होगी इसकी. It should be negative value. So applying the formula for psi, which is tan inverse r over dr by d theta. R is given to you as 2 plus cos theta. What is dr by d theta? Minus sin theta. So minus sin theta is dr by d theta. ये आपके पास psi की वैल्यू आ गई. Putting the value of theta to be equal to 90 degrees and taking its tan inverse, this value of psi would comes out to be minus 63.43 degrees. Now since this psi comes out to be negative value, it means कि आपकी जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो आर एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती है. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, what should be the direction of normal axis now? Center. Perpendicular to the tangential axis or towards the center of this curve. So this is going to be the direction of n axis. So आपके पास ये चारों axis आ गई हैं. किसी को इन axis के हवाले से कोई डाउट? Okay, so if the axes are clear to all of you, then moving on to the forces which are being involved in this case. So starting with the first force, which is the fork rod exerting on this particle, what should be the direction of that force? Along negative t. The fork rod which is exerting some force on this particle. Along theta. Theta. It is always going to be perpendicular to the contacting surface. जब आपके पास fork rod
इस डायरेक्शन में आई हुई है, इट मींस कि ये आपका वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, तो आपके पास वो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्टिंग सरफेस आएगा, विच इज बेसिकली योर थीटा एक्सिस. सो ड्राइंग दिस फोर्स हेयर एज एफ ओ ए, या यहाँ चूंकि फोर्क रॉड है, सो एफ रॉड के तौर पे मैं इसको जो है वो शो कर देता हूँ. सो दिस इज गोइंग टू द फोर्स which this rod would be exerting on this particle or on this can at the instant when theta is equal to 90 degrees. This force would be acting along the theta axis. Any other force which you want to include in this free body diagram? The normal force. वो नॉर्मल फोर्स हमारे पास क्यों आई है? बिकॉज बेसिकली वी आर रिमूविंग दिस हॉरिजॉन्टल पाथ, यानी ये जो हम पाथ ग्रूव पाथ है इसको हम रिमूव कर रहे हैं, सो उसकी वजह से हमें नॉर्मल फोर्स मिलेगी. एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल फोर्स? Along positive n axis. ओके, अलोंग पॉजिटिव एन एक्सिस. तो चलिए मैं उसको यहाँ पॉजिटिव एन एक्सिस की तरफ जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ. सो दिस वुड बी माय फोर्स एन सी. Since we need to resolve this nc along the r and theta axis, so we should be knowing the angle which this nc would be making either along the r or along the theta axis. So what should be this angle which this nc is making with respect to the r axis? 90 minus 5. It is going to be 90 minus 5. So आपके पास ये एंगल जो है वो 90 minus 5 आ जाएगा, because overall the angle between n and t axis is 90 degrees. Between r and t it is 5. So between n and r it is going to be 90 minus 5, which is 26.57 degrees here. Okay, so this will complete your free body diagram. Overall, the free body diagram is now complete. So once you are applying this equation summation FR equal to MAR, what should be the terms which we should include in this summation FR equation? It is only going to be a component of NC, isn't it? Yes, sir. So what should be that component? It should be NC cos of 90 minus 5, which is 26.57. Positive, negative? Negative. Because you are making components of NC, so the components are going to be negative theta component and negative r component. So minus NC cos of 26.5 should be equal to MAR. Now what is M in this case? Can you identify the mass of this particle? 2 pound. So is it mass? No, sir. Weight दिया हुआ है. Weight दिया हुआ है. So once you are putting it as a mass, so you have to divide it by the value of g, which is 32.2 fit per second square. So m would be 2 over 32.2. Okay, coming to the second equation, which is summation f theta equal to ma theta. What are the terms which we include in summation f theta? One is this rod force, which is represented here as f rod. Any other force? The component of NC. Component of NC, and as we have discussed, it would be also towards the negative axis. So minus NC sine of 90 minus psi should be equal to MA theta. ये आपकी दो इक्वेशंस आ जाएंगी. उसके बाद थोड़ा सा आप काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करके वो तमाम चीजें जो है वो दोबारा डिटरमिन कर सकते हैं. So moving quickly towards the solution, this is the free body diagram which we have discussed in the previous slide. This is the value of psi जो कि minus 63.43 आती थी. Accordingly आपके पास t axis r एक्सिस से उतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती हैं. सो राइटिंग समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर, एन सी with a negative sign cos component should be equal to MAR. Similarly, f rod minus NC sine of this should be equal to MA theta. Moving towards the kinematics, R is given to you as 2 plus cos of theta. So at theta equal to 90 degrees, cos 90 कितना होता है? 0. So it R would be equal to 2 fit. Similarly, R dot हम कैसे डिटरमिन करते थे? 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू थीटा डॉट. अब ये अक्सर स्टूडेंट काइनेमेटिक्स भूल के इस थीटा डॉट को कहीं जो है वो गायब कर देते हैं. हालांकि since r is given to us as a function of theta and we are determining r dot, which is the derivative of r with respect to t, so it is going to be dr by d theta into d theta by dt. वो चेन रूल का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आपको ये थीटा डॉट यहाँ शामिल करना पड़ेगा. So it would be minus 0.5 sin theta or minus 0.5 fit per second.
R double dot would be evaluated using the product rule again. So आपके पास दो चीजें हैं, sin theta और theta dot, both of them can vary with respect to time. So एक दफा आपने sin को constant रखा, theta dot का derivative, फिर आपने theta dot को constant रखा, sin theta का derivative. And since theta dot is constant, so theta double dot would be equal to 0. आपकी ये पहली term 0 हो गई. And cos 90 is also equal to 0. So overall आपके पास R double dot जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा. Then using kinematics formula for AR and A theta, these are the values of AR and A theta, which comes out to be minus 0.5 feet per second square. So once you have evaluated this AR and A theta, then it means कि आपके पास इस equation में NC and F are the only unknown quantities. So once you put the values of AR and N theta and solve it, you are going to get the value of NC to be equal to 0.0347, and the value of F rod comes out to be negative 0.1554 pounds. Now, what does this negative value indicate? So उल्टी तरफ act कर रहा है. It means that F rod is basically acting in this direction. ये किस वक्त possible होगा? ये देख रहे हैं आप? Decelerate कर रहा है. जी, ए थीटा की जो डायरेक्शन आई है वो भी आपके पास नेगेटिव आई है. इट मींस दैट इट इज डिसेलरेटिंग. द रॉड जो है वो डिसेलरेट हो रहा है, और अगर वो डिसेलरेट हो रहा है तो इसकी वजह से आपके पास जो रॉड की फोर्स है वो एक तरह से स्लो डाउन हो रहा है वो रॉड. तो रॉड की फोर्स आपकी दूसरी डायरेक्शन में आ रही है, बिकॉज वो डिपेंड कर रही है एनसी की डायरेक्शन में. एनसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से रॉड जो है वो स्लो डाउन हो रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?